Across the world, India has the third largest population of HIV patients, a virus that leads to lifelong diseases, altering the immune system, making people more vulnerable to infections, to even developing AIDS. HIV cases in India may have dropped to 50% due to the significant progress made through HIV/AIDS response programs. However, the risk of developing new infections still remains. The World AIDS Day this year tries to go a step further and highlight upon the importance of getting oneself tested and end the stigma around HIV testing with its theme Know Your Status. We still have a long way to go in terms of testing, and specifically we have the 90% target, which we are by the 2020, which is telling us that we have to test at least 90% of people living with HIV/AIDS and put them 90% of them on treatment. Meaning simply that we have again to push for that, so that people to that strategy, so that people will really take care of themselves when they know their status. That is critical. That is the entry point in terms of services. That is the entry point in terms of prevention. That is the entry point in terms of really living a dignified life. And that's why we really encourage everybody to see how better you can get access to those the testing services, making sure that you are tested and you know your status. Shankar came to know about his HIV status when he was asked to get himself tested during his wife's treatment, who was suffering from hepatitis. मुझे जो है अपना HIV स्टेटस सन 2002 में मालूम पड़ा था। तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है मेरी वाइफ उसमें एडमिट थी। तो खास करके पहले मेरे वाइफ का पता लगा था। तो पहले मेरे वाइफ को हेपेटाइटिस बी सी की जांच की गई थी, फिर बाद में डॉक्टर का शायद दिमाग शायद HIV की तरफ गया, फिर उनका HIV टेस्ट किया गया। तो पहले हमारे वाइफ को हेपेटाइटिस बी सी और HIV का टेस्ट किया गया, तब कहीं ना कहीं उनको ध्यान किया है कि मेरा भी टेस्ट होना चाहिए, फिर मेरा भी टेस्ट किया गया। मैं हेपेटाइटिस बी सी तो नेगेटिव हो रहा, लेकिन मैं HIV पॉजिटिव सन 2002 में हो गया था। तो 9 मार्च 2003 को जो है मेरी पत्नी ने अंतिम सांस ले ली थी। तो सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए ये था कि एक तो मेरी पत्नी ख़त्म हो गई, मेरे साथ में मेरा लड़का भी था। तो और मुझे लगा कि आज जिस तरीके से मेरी पत्नी ख़त्म हो गई है, तो इलाज न मिलने के कारण अब नंबर मेरा भी आने वाला है। मुझे 2002 में पता चला था, जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी। तो जब मैं टेस्ट हुआ तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ। तब मुझे 7th मंथ थे और मुझे इतनी जानकारी नहीं थी और मेरे को टाइम भी ज़्यादा हो गया था। कुछ डॉक्टर कहते थे कि अबॉर्शन करवा लो, कुछ कहते थे नहीं टाइम ज़्यादा हो गया। मेरे पास ये चैलेंज था कि मैं बेबी को जन्म दूं या नहीं दूं, अगर देती हूँ कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक माँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। Over the years, many government and civil society organizations have tried to create awareness and a space for dialogue around the topic by using music, dance and science. Pulse is one such theatre group which tries to portray the challenges of those living with HIV, their unmet needs, the stigma and social perspective in India through theatre. It was really important that our story resonate with people who live and work with HIV. So we made sure that we spent a lot of time speaking directly with people living with HIV and scientists to really get to hear the different sides of what HIV was and how it affected your life. So in our show we had different scenes, relationships with doctors. We had 2 characters, one newly diagnosed HIV positive person and one counselor who'd been living with HIV for a very long time, and to show the different sides, both scientific and the side of community, that become a part of your life when you're living with HIV. Despite awareness campaigns and the availability of treatment, HIV remains one of the most stigmatized health conditions in the country. रही बात चैलेंजिंग की बात, सन 2002 में भी समाज में HIV को लेकर के भेदभाव था, आज भी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, आज बहुत सारी संस्थाओं ने भी, नाकों ने, हर जगह से काम हुआ है, स्टिग्मा पहले से कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी स्टिग्मा जो है खास करके जो है समाज में। तो जो सीनियर डॉक्टर थे
उन्होंने तो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मगर जो जूनियर डॉक्टर थे, जब हम सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती थी, मैं भी उसी लाइन में थी, वो सबको बहुत अच्छे से चेक करते थे। मगर जब मेरा नंबर आता था तो आज तक उन्होंने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, ना मेरे बेबी को चेक करा, ना कभी मुझे चेक करा। बस पेपर पे लिखा हाँ सब ठीक है, बस इतना। मैं पूछती थी जब सबको आप चेक करते हो, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे बेबी का क्या है क्या नहीं, मगर कभी उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया और ऐसा मिसबिहेव करके भगा देते थे। इस साल जो बहुत अच्छी बात हुई है, 2017 में सरकार ने, पार्लियामेंट ने HIV एड्स एक्ट पास किया है, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन को गैरकानूनी करार किया है। राज्य इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हर राज्य में एक ओम्बड्समैन होगा जिसके पास लोग जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं, और इससे हमें बहुत उम्मीद है। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसमें 377 में, उसमें हमें बहुत उम्मीद है कि इनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होगा, कम होगा। ये एक सोसाइटल इशू है, तो हम सबको मिलकर इसमें कार्य करना है। लेकिन जहाँ तक कानून है, सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता अब साफ कर दिया है। तो वर्क प्लेस पर कोई किसी को अब ये कह कर कि आप HIV एड्स पॉजिटिव, आप HIV पॉजिटिव है तो आपको हटाएंगे, ये सब अब नहीं हो सकता। According to the 2017 UN/AIDS data, new HIV infections in India have decreased by 46%, and AIDS-related deaths have decreased by 22% since 2010. In 2016, India had 80,000 new HIV infections compared to 150,000 in 2005, and 62,000 AIDS-related deaths compared to 150,000 in 2005. However, according to the global experts, an increase in new HIV infections is inevitable unless there is an effective viral load suppression of those on treatment and substantial decrease in the rate of HIV transmission through regular HIV testing, especially of those in the risk group, to receive quality care and prevention services.